friends, good morning everyone. Now I am going to start physics, chapter first, electric field and charges, that is electrostatics, which deal mainly of electric charges. So in this video I am going to give you a brief view over electrostatics, that what is electric charge, what is basic properties, what is electric field and what is electric force, the laws which we are going to discuss in this chapter. Mainly I am going to tell you about the introduction of it, introduction of this chapters. So it is the chapter is electric field and charges, or it comes in the branch of electrostatics. And what is electrostatic? First I am going to tell you this, that what is electrostatics. So you know, the electrostatic is the branch of physics that deals with, electrostatic is mainly the branch of physics that deals with electric charges, electric fields, electric force, electric potential and electric energy due to the charges at rest or at static position. So this is electrostatic. It is mainly a branch of physics like thermodynamics, kinematics, and in the same way electrostatic is one of the most important branch of the physics that deals with the charges. So now I am going to tell you what is electric charges. So first is, what is electric charge? This chapters deal with this only. Without this nothing is possible, because due to this only we have to find electric field, electric force, electric potential, potential energy. Due to what? Due to this static charges. Static charges means a charge at rest. अगर हमने कोई चार्ज प्लेस किया है, सपोज क्यू चार्ज प्लेस किया है, तो उसके वजह से यहाँ इस फील्ड में कितना फोर्स लगेगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, कितना पोटेंशियल होगा इस चार्ज को इधर ले जाने पे, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी होगी, ड्यू टू दिस चार्ज ओनली विच इज़ एट रेस्ट. रेस्ट दैट इज़ एट स्टैटिक पोजिशन. अगर ये मूव करने लगता है तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. सो क्लास 12th में जो हमारे चैप्टर्स हैं वो 1 by 1 एक सीक्वेंस सीरीज में हैं. द फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विच डील्स विथ व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट. जो पहला चैप्टर है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वो हमारे चार्जेस पर डील करता है व्हेन इट इज़ एट स्टैटिक पोजीशन. जब वो स्टैटिक पोजीशन पे होगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, मीन्स अगर हम दूसरा चार्ज लाते हैं तो उस पर कितना फोर्स एग्जिट होगा उस फोर्स के कारण. सपोज दिस इज द चार्ज विच इज़ एट रेस्ट, सो हम कोई और चार्ज ला रहे हैं तो उसके वजह से उस पर कितना चार्ज लगेगा इस चार्ज की वजह से, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज ले जाने में. देन पोटेंशियल एनर्जी, इस सारी चीज़ हम स्टैटिक चार्ज पर ही डिस्कस करने वाले हैं. एंड देन हम पढ़ेंगे गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं ड्यू टू वेरियस शेप्स. वो सब हम इस चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टैटिक चार्जेस. नेक्स्ट चैप्टर, फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो होंगे लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एंड द सेकेंड चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये दोनों चैप्टर्स जो हैं हमारे चार्ज रेस्ट पे है तभी वर्क करेंगे. अब थर्ड चैप्टर में हमारा चार्ज मोशन करने लगेगा, मीन्स मोशन मीन्स मूवमेंट. सो मैंने कहा ना, व्हेन चार्ज इज इन मोशन देन इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट्स. तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी. इस चैप्टर में द चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड द चार्ज इज एट रेस्ट. चैप्टर थर्ड में चार्ज जो है मोशन हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस. देन चैप्टर फोर्थ में अब अगर हमारा चार्ज मोशन करने लगा है तो मूविंग चार्ज जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था. पहले हमारा चार्ज रेस्ट पे था तो फोर्स लग रहे थे, कितना फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज़ ऑल अबाउट. देन इन फर्स्ट सेकेंड चैप्टर तो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट पे डील करते हैं. नाउ दिस थर्ड चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट, दैट व्हेन चार्ज इज इन मोशन, जब हमारा चार्ज मूव करने लगेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी. The fourth chapter deals magnetic effect, मतलब magnetic intensity, that is when charge is in motion then magnetic field is developed around it. This experiment is proved by Oersted experiment. ये हमारा Oersted experiment ने प्रूव किया था कि उन्होंने कंपास नीडल जो उसकी डिफ्लेक्ट करने लगी थी व्हेन करंट फ्लोज,
उन्होंने एक वायर लगाया था, उसमें करंट फ्लो कर रही थी और उसके पास रखी हुई मैग्नेटिक कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करने लगी। तो उन्होंने सोचा कि हमारी करंट फ्लो करने की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन होने लगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी जिसकी वजह से वह डिफ्लेक्ट हुआ। सो इट मीन्स दैट मूविंग करंट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। द फिफ्थ चैप्टर इज ऑल्सो सेम लाइक दिस। नाउ द चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने फिफ्थ और फोर्थ में पढ़ा कि दैट मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। द रिवर्स इज दिस, दैट मूविंग अ मैग्नेट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो ये सारे चैप्टर्स जो हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हमारी वीडियोस आती रहेंगी, यू कैन सी ऑन इट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, that is electric charge, without which nothing is there. So electric charge is an intrinsic property of matter, of elementary particles. You are thinking what is intrinsic property? So what is electric charge? It is an intrinsic property. Intrinsic property of property होती है elementary part और matter की। अब आप सोच रहे होंगे what is intrinsic property? Intrinsic is what? It is fundamental or independent or internal property. What is intrinsic? It is an internal property of an elementary particle. हमारे कोई भी पार्टिकल के अंदर जो एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है दैट इज इंट्रिंसिक। और इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक तरह का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की, पार्टिकल्स की। ओके, अब how many types of charges is there? What is basic properties? So there are mainly two charges. Two charges means positive और negative charge. Generally question आता है how many types of charges are there? तो positive charge written as positive and negative charge written as negative. So these charges are there, positive and negative charges. And its property is that the like charges repel each other. पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। So you have learned about what is electric charge. It is an intrinsic property of a fundamental particle. What is intrinsic? It is an internal, means something internal means deeply detail में, and there are two type of charges, positive और negative. अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है what is a basic property of elementary particle, that is electric charge. Basic properties क्या होती है? The first property is what? Basic property of electric charge. पहला है interaction property, interactive in nature. First is interactive in nature. What do you mean by interactive in nature? The same thing that I have told is that like charge repel each other and unlike charge attract. Means the charges exist force on each other. That is known as interactive. Interactive deals means attraction or repulsion. So the combination of this is interaction. And what is interactive? What is interactive in nature means that the charges are interactive, means they exert force on each other's. Positive charge, the two positive or the like charges repel each other and unlike charge attract. The second property is conservation of charges or conservative in nature. The second property of electric charge is conservative in nature, means the charge are conserved. That is the total charge on a system is a sum of or algebraic sum of all the charges on the system. The third property that I am going to discuss is quantization of charges. Third is quantization of charges. Of charges. What do you mean by quantized? Quantized means that with something which is present in whole. It should be in a whole number, not in a fraction. Means a charge is quantized. It is the integral multiple of NE. जो charge होता है वो हमारा integral multiple होता है. The charge which is present on a system is an integral multiple of N.
where n is 1, 2, 3, 4 dash dash dash. It should not be in integer of fraction, or what is E? It is a charge which is 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. Means that fundamental elementary charge जो present होता है, that is 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. It is a value of E. Or what is quantization of charge? Means that the charge is always an integral multiple of the fundamental charge. It means that it should be present in a whole number, not in a 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. The next would be 3.2, 4.8, 6.4 means integral multiple of this. इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.62, 3.23, 4.8, 4 मल्टीप्लाई किया तो 4.8 और 4 मल्टीप्लाई किया तो 6.4, 5 किया, ऐसे हमारे जो हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे इंटीजर्स के. It should not be 3.3 because it should not an integral multiple of this. It should be 3.2 only. Understood? So there are three properties which I have discussed: interactive in nature, conservation of charges, and quantization of charges. So these are the properties of electric charges. So all the properties of charges I have discussed. Additive in nature means that additive in nature is one of the charges, means that the total charge is a sum of all the charges present over the system. So the fourth one is additive in nature. Or additive property. So there are mainly four properties. First is interactive in nature, that is a charge exert force on each other. They can repel each other or attract. Same charges repel and unlike charges attract. Conservative in nature means a charge in a system is conserved. Quantization of charges means a charge should be an integral multiple of the basic elementary charges. Or additive in nature means a total charge which is present at the system. Suppose this is a system having minus q plus 2q minus 3q charges. So what is the charge on the system? Minus q minus 4q and minus 4q plus 2q minus 2q means the charge is minus 2q. This is a total charge which is a sum or algebraic sum of all the charge present on the system. So this is all about the property of electric charges. So in this video you come to know what we are going to discuss in physics. First is electrostatic, then then electric current we proceed, then what is magnetic field, magnetic intensity, then electromagnetic induction. This is all sequence I have told you. In the first topic is electrostatics, that deals with electric charge at rest. So I have told you what is electric charge, what is intrinsic nature, it is an intrinsic property, what is intrinsic, and basic properties of electric charge. All I have told you. All this I have told you. Now in the next video you are going to learn about Coulomb's law or electrostatics law, that when two charges are placed close to each other, how much force they exist on each other. Then the force due to multiple charges, means suppose there is two charges, then both the charges exist force is on each other. Both the charges exist force on each other. It either may be repulsive in nature or it is attractive in nature. So this is Coulomb's law. If there are more than two charges, means multiple charges, then we are going to discuss the law of superposition. Superposition means the sum of all the algebraic sum of all the charges. And so in the next video you are going to learn about the Coulomb's law, force due to the multiple charges, and vector form of Coulomb's law. Okay, thank you.